솔로데 여진자 니돔 느르 보따 느르 여진자 봄부러 꾸나며 보따가 들렀다 여진자 보따가 러롱 새콩 할롱 여진자 이봉으로 My name is Anirudh Mukherjee. I live in Madhya Pradesh next to a tiger reserve called Kanha, and I run a small homestay there. I'm also related to a lot of wildlife conservation activities. I do a bit of research for the Manchester Metropolitan University. I'm also related to Oxford, and it was in relation to these things that I was asked by Green Hub to come and have a look at the responsible tourism project, especially in Manigong, and some kind of suggestions and preliminary report on the way the project was working and its future and its potential. हम भी तो राम ये आलू को नीचे बेची है ना इसका वो लोग जो रिमूव में भी आलू को नुकसान दे रहे हैं अभी वो लोग का वजह से हम लोग भी थोड़ा सुधार मान लो ये सुधार गया तो सुधारने के बाद तो क्या सोचा अभी जो एक तो मतलब जो ये टूरिज्म के बारे में आ गया ना फिर उसी से ही मतलब हम भी थोड़ा मतलब अलग से मतलब फिर जो दिल में कुछ आ गया मतलब उसको किसी ना हंटिंग करने से क्या फायदा है इसलिए इसे सोचा तो हम भी बड़ा भैया हम लोग का ये मतलब 5 चेत है यहाँ का ना ये बस्ती का डेसिंग का ना फिर लबू में भी है जगह में हंटिंग सब करता था तो हंटिंग से ही हम लोग मतलब ये जो घर मतलब फैमिली को ही चलाता था ना जो मतलब खाने पीने के लिए पहनने के लिए सब कुछ इसलिए अभी ये चीज़ मतलब ये जो लड़का लोग ये जो रिमूव में लोग कर रहा है मतलब ये सब तो मेरा बेटा ही है इसलिए हम थोड़ा जवानों में से भी हिसाब में ये बेटा लगता था ना इसलिए हम सोच रहे मैंने जो गाइड भी नेचर गाइड ना तो हम लोग मतलब पूरा मालूम है तो जहाँ में जो एनिमल है ना और ये जो जहाँ मतलब कहाँ में मतलब ये होता है मतलब मेन मतलब जगह और जानवर कहाँ में रहता है इसमें मालूम है मेन में यही मतलब हम लोग ही खुद कर लेगा मतलब इसे नेचर गाइड को भी ना सारे इसे सोच रहा है मेरा सब चीज़ों को मतलब मेरे पास ऑलरेडी इतना सारा नॉलेज है ना नाइट गाइड का कौन सा जगह में चिड़िया कौन सा सीजन में मिलेगा रेड पांडा कौन सा जगह में मिलता है कब मिलता है उसका देन वो साउंड से ही सुन के मतलब लोग पता चलता है ये वो चिड़िया तो मतलब ये लोग को भी हम लोग मतलब बेसिक पता है कि जैसे कि आपको मतलब वो चिड़िया का सेंट भी ऐसे पूरा नाम मालूम होने जरूरी नहीं आप लोग को एक बर्ड बुक मिलता है तो वो चिड़िया का साउंड को सुन के फोटो आइडेंटिफाई करना चाहिए ये चिड़िया जो वो साउंड करने वाला बोलते हैं उतना से मतलब हो जाएगा बोल के तो एक बार अगर आपका मतलब जो आपके रूम्स बनाने हैं या टेंट लगाने हैं उस तरह की चीज़ें एक बार तैयार हो जाए फिर मैं इनसे बात कर रहा था कि उसके साथ थोड़ी टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि लोगों को लाके कि चीज़ सही चल रही है जो यहाँ की मतलब यहाँ की संस्कृति है यहाँ का कल्चर है उसको दिखाना है anabu koyum abuteli gele ben limu
abu tani le la ko na olo abu gedinga ben pa olo abu bensi le mo mai ben go na abu tani le ko yum ni tinu le ipa olo le abu si le na lo ngulsi daja ngulu atu gedinga abu gedinga ka olo ben taga ro mo matolo e ipakam gelonga sutum tere tar solya dak sudum tar solya dak pori jakka gedeng gedeng tar so poroga pomya dak abi gi kulonga ngulu jakka ikula ajaga jakar changi sol kugi mendo ningul opgilo kubum patangam do panaka baka abi namam haja dokumo gitisi yetoku holoka jakka tuku mendo da tokigi kulong batang kumong ubing pa dokumong ka lobu koresi dokumong ka kayum yedek eri namul kayum dona tingnan top mo bigi kulong ga el kayum mat do ting top mo lo auso nan tup mo e tup mo ipa ku chiki pa nan tup aja chiki kun pa bap mo eji kun ko bap eji bo cho sikka changan tolo kayum ta olo do dokumong mudo namba do na takpom busum do panal takpom busum tinda uyenim do panal renginim do panal yoyem do panal ol sengiem isinga do to ayitem do panal muto olu singpan ajayan pudak. See, for any person coming to Manigong, the journey itself is fascinating. You know, it takes you 2 days to really come in here, and the terrain and the landscape is just mind blowing. So that is the first initiation. It is. In this one, that's why. Market में मिलता है वहाँ पे। ऊपर वाला गोल काटा है के तो ना चुपसी टैंग पानी से भिजा के जूनियर है ना काटा है उसको खाता है हाँ जी नहीं नहीं जल गया ना बहुत मजा आता है The first village that we went to, Lusing, I think the campsite idea was excellent because the village itself doesn't really have very good rooms, and the houses are not that great. But if that campsite can be worked out, and that campsite is nicely developed with activities done there, with birding trails and with walks around, and even the views are just amazing. So you can easily have a nice 4 or 5 day, a stay in that place itself for somebody who's coming from outside. यहाँ में तो मतलब हम लोग का इतना तो मतलब ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और बस्ती वाला तो और स्कूल भी नहीं है और तो मतलब फॉरेस्टर लोग भी यहाँ नहीं आया है फॉरेस्टर लोग मतलब लड़ी वगैरह मतलब जानवर को मतलब मौत मारो बोल के कोई नहीं आया लेकिन तब भी मतलब आप सब आके हम लोग मतलब ये तो शिकार कम करेंगे और लकड़ी उड़ी को भी मतलब हम लोग मतलब कम मतलब काटेगा और मतलब बचाएगा तो और मतलब फ्यूचर के लिए हम लोग मतलब बाल बच्चा के लिए और मतलब लकड़ी को भी बचाएगा. My name is Vivek and I'm first batch Green Hub Responsible Tourism Fellow. We are working in 4 villages, namely Lusing, Labukor, Simugong and Sugdom of the Sajitri segment in Manigong. And in this project, we are trying to provide an alternative livelihood source for the people by using tourism as a tool. Because
the people of Manigong, they do want to participate in conservation action and also want to reduce hunting practices, but because there's no other alternative livelihood opportunities available in that area, being a very remote village, so like tourism, we are trying to use it as a tool to provide them an alternative livelihood source. At the same time, we are looking at different aspects of it as so that like we could do it more responsibly. After the fellowship, 4 fellows, including me, we are working on Manigong now under mentorship of Rimung Taso. ये तो मोटा वाला वो रूट को निकाल के उधर चाइना ले जाता था बोला ना पहले ये कपड़ा में वो कलर डालने के लिए कलर एक तो कलर बन जाता है ये नाम क्या है इसका? टामेन बोलते हैं हम ये घास में पर लगता है नाम है टूलिन और इसको आदमी खा सकता है इंसान भी खा सकता है अच्छा जानवर भी खाता है और इंसान भी सीजन में आती है ये चीज़ को ना अभी चिड़िया खाता है अभी पक्का नहीं है और ये पकने का बाद इधर हम लोग बाटिंग भी कर सकते हैं When you come to Lusing, you could do a 2 or 3 day kind of a camp. Then you could move to Lobukor. And in Lobukor, if you could just improve the roads a little bit there, the approach a little bit, the houses, the families, the way people live, the way people interact is amazing. इस गांव का नाम है सिमुगोंग उसका नाम सिमू था ऐसा मतलब उस पुल का नाम था सिमू हाँ सिमू हाँ इसका पर गांव मिला दिया ना बस्ती को मतलब क्या रहता है उसमें कुछ पहले जमाना में मतलब जैसे कि कुछ मनाला होता है ना जैसे कि पानी जब बीमार होता है तो वहाँ में कोई जो जैसे कि तवांग साइड पे हो गया ना जैसे कि बीमार होला वो जब गर्म पानी निकलता है ना वहाँ में बैठने से गर्म मतलब बीमार ठीक हो जाए ठीक हो जाते बोलते हैं ना उसी तरह ये जो मतलब ये सिमू मतलब पहले जमाना में जो गाय ज़्यादा रहने देता था बोलते हैं जो ना उसमें एक मतलब हाँ पानी इसे अगिर बुतुला पानी का वजह से भी रहता था होगा लेकिन पहले ज़माना में ऐसा बोलता था अभी लेकिन थोड़ा पानी सूख गया ना इसका लिए So the third village which was Simugong, the approach, the surroundings, the views are just absolutely stunning. Also the little the stream that falls, the little waterfall, all that really adds to the ambience. There I think the rooms would need to be improved a little. The linen needs to be improved. I think a little bit of planning needs to be done in terms of educating them in getting over their fear. Because there's a lot of fear in their mind, what will happen, who will come, how will we take care of them. But the leadership in the village is very good. And there are very articulate people there who can help people understand what is going on there, understand their culture, understand their their lives, how their husbands go away working for long periods and they are together.
So there's like I sort of noticed that there's like a sisterhood which sort of runs the lives of their daily lives and their children. And then also I realized that many of the children, many of the families actually live in Manigong because there are no schools nearby. So all these things are very interesting for people from outside. So they should also learn how the other half lives, no? My interest also lies in studying the indigenous alcohols of India. And one of the richest places for both spirits and brews is the northeast, especially Arunachal Pradesh and Nagaland and Manipur. And I was very keen to see various ways in which beer and spirits are produced here, and was also keen to see the kind of techniques used and maybe experience the techniques as well. The main thing in providing people with the skills to receive guests, the skills to be good hosts, is innate. And for people here, it's all there already. So you need that a little push, that little that trigger to bring that out. And the artifellows are doing it perfectly. The important thing is that artifellows know the people very well. They know everybody. They know every child's name. So for them to communicate and make them understand and bring that that talent out of their minds is very important, and they're doing it very well. So I feel in a couple of years this will really be one of the the showcase homestay projects in India, if not internationally. Jagar boropuna up muluga bia poda ka mon karanga mia karna agu dinga bapa olunguluga vego mat po itolonga mo manum po nego go yakudun ko poda mo olo ego mat po mo ai temulu obu ego nalo obudu man gulu andar soji tiri andar sim ni tum ni aga ne akel sudo ma Kediam pergi takam pucing mo gidopana. Ulungam rokpong gidopana. Ulung laki dopana koyum. To olupat. Haja ngulu hempodoku meno jakarga jangi solo. Menu si po yato deng ka simme atoga kedi jum dablogam isu gelonga bercangan bem dablo solo on beli te isu bikap mukulam kedi dam mukulam dablog isu ngulato sudabo. Ito ka man yanasi yato kai. Malu on berkurcum kedisum atuyanal ngal atuyanal pori no betal cuma atuyanal pori no mo cuma atusuta. There is enormous potential in all these places to create homestays here, because this area is completely unexplored. Before I came here, to be honest, I had never heard of this place. So to me it was a revelation, and I am sure to many people who will be visiting this place in future, it will be a very, very enriching experience.